Hello, my friends. How are you doing today? I'm here, your Ramandeep saying, the host, with a new cue card to share with you. And the cue card, it has been requested quite a lot now. And the cue card is talk about a family person with whom you like to spend a lot of time or with whom you have spent a lot of time. Who the person is, how much time do you spend with him, how do you like to spend, and why you like spending time with this person. I must say, you already have lots of ideas for this cue card. That's why I never go ahead with these simple cue cards at first. Well, now not too many cue cards are left, and I feel like I should be sharing the sample to this one. आप अपने brother के साथ, अपने sister के साथ, father, mother, grandparents, जिस किसी के साथ भी चाहते हो, आप time spend कर सकते हो, but make sure you have few things to talk about. मैंने यहाँ पर choose किया है अपने grandmother को. Anyway, उनको याद करने का मौका मिल गया. She is no more, but the fact is that IELTS हमें यही मौका देता है कि हम उनको दोबारा से याद कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े उनको वापस भी ला सकते हैं. है ना इंटरेस्टिंग बात IELTS की. यहाँ पर मैं अपने दादी जी को वापस लाने वाला हूँ और बैकग्राउंड में मैं ये बताऊंगा कि शुरू से ही चाइल्डहुड से ही उन्होंने मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है और उनके साथ मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, जिसकी वजह से मेरे ग्रैंड मदर की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक मी टू द स्कूल एंड ब्रिंग बैक फ्रॉम स्कूल. वो इन द एब्सेंस ऑफ माय मदर मुझे लंच देते थे, मुझे बहुत सारी पैम्परिंग करते थे. इनफैक्ट हम इकट्ठे खेलते भी थे. देन हम ये भी कहेंगे कि एट नाइट टाइम ऑल्सो मैं अपने दादी के साथ ही सोता था. वो बहुत सारे मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाते थे जो मुझे आज तक याद हैं. Then we will talk more about her कि उनको बहुत नॉलेज है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है. अभी भी मेरी रूटीन है, मैं उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ. ये हम दोनों को फिट एंड हेल्दी रहने में हेल्प करता है. ड्यूरिंग दिस टाइम मुझे उनके साथ गॉसिप करने का मौका मिलता है. हम टेम्पल जाते हैं. मेरे दादी को हिस्ट्री एंड रिलीजन की बहुत नॉलेज है, तो उनके बारे में मुझे वो अपग्रेड करती हैं या उसके बारे में मुझे नॉलेज देती हैं. इनफैक्ट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि वो कितनी एक्सपीरियंस्ड वुमेन हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो बहुत इजीली हैंडल कर लेती हैं. मेरे कई सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स रहते हैं या डाउट्स रहते हैं. कई बार आई फील हेजिटेट टू शेयर देम विद माय पेरेंट्स और अदर्स या फ्रेंड्स इवन, बट आई ऑलवेज गेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द ग्रैंडमदर. ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इनफैक्ट आप कुकिंग की बात कर सकते हो. नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर माय हायर स्टडीज, जिसकी वजह से आजकल मैं उनसे कुकिंग भी सीखता हूँ. सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू talk about, and that's the beauty of preparation of the cue card. जब आपको 1 मिनट का टाइम मिले तो आपको सिर्फ यही काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा उस क्यू कार्ड में आप बोल कह सकते हो उसके बारे में सोचना है. एक बार आपके पास 5-7 चीजें ऐसी आ गई तो फिर रिदम अपने आप से बन जाएगा. 1, 2, 3 डिपेंडिंग ऑन द टाइम आपके पास कितना है या कितना एग्जामिनर अलाउ कर रहा है. आप कंटिन्यू रखिए. जैसे वो आपको एक हल्का सा सिग्नल देता है या आपको स्टॉप करने के लिए बोल भी देता है, यू विल बी नेवर एवर आउट ऑफ आइडियाज और एनीथिंग लाइक दैट. आप कंटिन्यूअसली एंड फ्लुएंटली एग्जामिनर के सामने बोलते रहेंगे. Let's start today's sample. But before I move, I would like to request you to please subscribe my channel, help me to grow more, and please share my videos with others as well. I hope you watch my videos on 10. New admission session of 2020. So if you know someone who is living in Moga or willing to come to Moga for IELTS preparation,
Tell them about your bright future, where I conduct the Ielts classes and I help students to achieve their dream target scores in Ielts. So let's begin today's sample answer. Well, I have a strong intimacy with my all family members and I enjoy each and every family member's company. However, if I have to choose one with whom I like to spend more time, she is definitely my grandmother. My grandmother is definitely the person to whom I feel to be very close. She is an old lady in her late 70s, but still she is fairly active and energetic. Actually, I have a very strong connection with my grandmother since my childhood. The fact is that my both parents are working and in their absence, my grandmother used to take care of me. She was the one who used to drop me at school and bring back as well since my school was not too far from my home. After coming back from school, she used to serve food to me, play with me, and also help me in doing my homework. In addition to it, in childhood, I also used to sleep with my grandmother and listen bedtime stories from her. I must say she gave me a lot of pampering in my childhood as I was her most loving grandson as well. Even today, I spend a lot of time with my grandmother. Early in the morning, we go for a walk because she has a rich knowledge of history and religion. And during the walk, she often shares interesting stories related to religion and other historical moments. I don't feel hesitant to say that she is just like a friend to me with whom I can comfortably share my problems and secrets. And she's very mature and well experienced. That's why she always give me the best solutions to my problems and guide me in a proper way. In fact, these days I'm planning to move abroad for my higher studies, so I'm also taking her help in learning how to cook food as she is a wonderful cook as well. And in this way, I spend healthy 2 to 3 hours with my grandmother and makes her a family member with whom I like to spend my most time. And that's it. यही आप ग्रैंड मदर की जगह चाहें तो अपने मदर की बात कर सकते हैं, अपनी एल्डर सिस्टर की बात कर सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे आप कहेंगे कि वो आपको होमवर्क करवाने में भी हेल्प करती थी, पेरेंट्स जब नहीं होते थे तो आपके लिए फूड कुक करती थी. ज़्यादातर वही सारी बातें ही आ जाएंगी. एंड इवन दो शी इज मैरिड टुडे, स्टिल आप उनसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, यू गेट द सॉल्यूशंस. And that's how easy it is to handle this cue card. So I'll catch you very shortly in my next video. Take care of yourself.